Done, sir. Today, we have a very accomplished IFS officer with us, Mr. Uma Shankar Singh. He will give us a talk about forests. It is going to be very, very interesting talk. Now I call upon Dr. Pushpinder Kaur to welcome and introduce the speaker. Thank you, sir. Good evening, everyone. My name is Pushpinder Kaur, and on behalf of Microbiology Society of India, Chandigarh, I'm here to welcome Dr. Uma Shankar Singh, who is our today's guest speaker, and he will deliver his talk on the status of forest in India. We welcome you, sir. Before proceeding further, I would like to acknowledge the efforts of Dr. Swaranjit Singh, who took the initiative to organize such informative talks and other activities. I would like to introduce Dr. Swaranjit Singh to our speaker and to the audience. Dr. Swaranjit Singh is an eminent scientist, and his name has been listed in top 2% global scientists for consecutive 3 years. He is the president of Microbiology Society, Chandigarh, and holds the position of director, SAS Free Polyclinic Perch in Mohali. He is the former head environmental biotechnology and microbial biochemistry, CSIR IMTech. He has published his research work in high impact journals, and his H index is 58, which shows that his work has been widely cited by various researchers in literature. Due to his contributions to the scientific community, he has been awarded Loyola Environmental Award. He is also the recipient of Lifetime Achievement Award in 2022 by Xavier's College, Ranchi, and in 2023 by Shulni University. He is the member of 2 WFCC committees and the member of Task Force National Biodiversity Authority, Chennai. We welcome you, sir, also. Now I take the honor to introduce our guest speaker, Dr. Uma Shankar Singh. Dr. Uma Shankar Singh has been serving in Indian Forest Service for a period of over 3 decades under various capacities in different places. He did his MSc in Botany from Ranchi University, MSc in Forestry from Indian Forest College, Dehradun. He did the certificate course in Environmental Impact Assessment from Redford University, England. He did his PhD in Carbon Sequestration in Sal Forest of UP, DSc in Carbon Sequestration in different species of plantation forest in UP. He has published more than 20 research papers in various national and international journals of repute. He has also written a management plan of Shivalik Forest in Dehradun. During the course of his service, he has worked at various levels and dealt with the issues like sustainable forest management, protection, planning, and implementation of different governmental schemes for the improvement and the maintenance of the ecological landscape of our nation. He also worked as Director Planning Commission of India, the nodal agency of the country to formulate a plan for the most effective and balanced utilization of country's resources. He has also dealt with in the subject of National River Action Plan at the central level, monitoring the activities of its conservation, rejuvenation, and sustainable use. Along with it, he has also served as the director of Dudhwa National Park. His work has been acknowledged various times and he has been awarded for the same. To list a few, he received Mathur's Gold Medal at Indian Forest College, Dehradun, Director's Medal at Lal Bahadur Shastri, Nainital Academy of Administration, Missouri, Governor's Medal for creating high-tech nursery, Kalika Prasad Award in the field of excellence in social service. He is also the member of some of the most prestigious committees in India. Currently, 8 students are working as PhD students under his supervision. We are truly honored to have such
personality of magnificent profile with us. We welcome you, sir, and I request you to kindly start your talk. Over to you, sir. Thank you. Thank you, Pushpinder. And I believe, are you able to hear me, everyone? Yes, yes, sir. Thank you. I don't know how to start because I have been talking on this issue since long, and the forestry is one area which has been relegated to the backseat. And I very often say that the forest does not need us. We need forestry. We need forest because we depend on forest for our living. If the forest isn't there, we are not there. The civilization will perish away. So the forest is extremely important as far as our survival is concerned. But honestly speaking, we have come to a point of almost at the verge of being written off, and forest has come to a point where it's not a question of their revival, it's a question of the survival. So with this, I would like to begin and tell you the status of forest in India. It is truly sad. In fact, one of the saddest picture I've ever gone through. The forest is almost declining to a stage where I don't think this would come back. I don't know how this feeling comes to me. Maybe because I've seen the forest across the country, I've seen forests across the world. Maybe the forest, what I have seen and how, or maybe I read about the forest ecosystem. Maybe those impressions have been on me, and I know that it's very difficult to come back as far as the forest is concerned. India is a wonderful country, I always say, and India is a very rich country with the poor people around. India is a country where 1% of population, 1% of the population has a wealth of wealth to the tune of 73%. That means 1% Indians control a wealth of 73%. So this is India, and this is also India where inequality has gone up to the extent that probably 230 million people have gone down the poverty line in last 2-3 years. And if you look at the growth rate of the high net worth individuals in our country, this is growing at the rate of 53%. Absolutely phenomenal. And they are being added to the society, and as they are added, the inequality also grows. India has a 2.5% of the global Earth surface, which supports 7.8% of the biodiversity and 18% of the world population. So this is phenomenal. Again, I would like to tell you some of the statistics because this is very, because that also enables you to understand the depth of the forest, what we had earlier and where are we today. India had somewhere around 55,048 plant species, which constitute somewhere around 11.8% of the world flora. And out of this, 18,500 plants are the flowering plant species. And out of which, again, 32% are endemic. We have a little more than 1 lakh species of fauna in our country, which constitutes 6.45%. This is fine. But what I want to emphasize that the forest cover in India, the government of India publishes a biennial report. That's what we call the Indian State of Forest Report, ISFR. This is called the Bible sort of thing for all of us. And none else than Prime Minister launches this report every year. We have the latest report, which was published way back in 2021. Again, we are expecting this 2023 cycle to be there. And probably in the month of December, the next ISFR report will come. The ISFR report says that the forest cover in India is somewhere around
somewhere around 24.62%. Forest cover, gentlemen, ladies and gentlemen, I would like to tell you, the forest cover is a misnomer. Forest cover means anything that looks green from above, because the satellite takes the we try to find out the forest cover through the satellite imageries, and these imageries are that takes your tea garden, coffee garden, everything into account while saying something about the forest cover. Could you believe that we had a report called the Human Impact on Biodiversity in last 50 years? The report was published in 2019. And what does it say? This says that in last 50 years, the global biomass in wild animals has gone down to 82%. And the decline in natural ecosystem has gone down to 47%. Plants and animals threatened with extinction has gone up to 25%. This is the state of affairs in our forest today. India has a shoreline of 7,500 kilometers. But I would like to let you know that the marine population, the fish population, probably I would like to tell, because fish population is very important for more than 40 million people, because they depend on fishes. They contribute somewhere around 1% to the GDP. And most of the fishes, they hatch in the mangrove forest. The mangrove forest is almost threatened. The sea fish or the marine fish has declined from 4 to 44%, and the freshwater fish has also gone down to 83% in our country. And why is it happening? Even the forest, the ISFR says that 46% forest is prone to forest fire. Yet again, a monster which is not controllable. We are not able to control forest fire nowadays. The impact of forest fire has become so huge that the forest fire has gone up by 125% in last 3 years. And will not be able, if we are not going to contain forest fire, probably besides causing a huge loss, financial loss to the country, this is going to cause a great damage to the biodiversity. And just for example, because I love economics, this has been estimated by the World Bank that forest fire causes a loss to the tune of 1,150 crore per annum in our country. And how much we are spending to contain forest fire? Just 50 crores from the central sector scheme. And out of this 50 crores, this works on the basis of the sharing of money from the state as well as from the center. 24% remains unspent, my friends. So virtually, we are spending nothing on forest fire. We are spending nothing. And once this goes, in fact, this has gone out of control, the forest is on decline. The ISFR report says that 66.6%, in fact, the forest has been classified as the very dense forest, moderately dense forest, then open forest and all, depending upon the density of the forest cover. 66.6% of the forest in our
states and UT have declined 66.6% forest cover. Dense forest and the moderately dense forest is gone. All of you know, because I understand that you people are coming from bio background, biological, natural science background, biological background, maybe botany, zoology, or maybe anything. We cannot equate plantation with forest. Forest takes hundreds and thousands of years to become a forest ecosystem. And dense forest is absolutely difficult to be back in the system if once gone. So, who is responsible? I always say that India is a country where we have, we plan, but the implementation part is not structured into the planning. It's ironical. And how it is important, how is forest important? I like to tell you one small example. ये 1994-95 की बात होगी. There is a country in Africa, Central Africa, उसका नाम है Gabon. Gabon is a country. और दो गांव है पुष्पिंदर जी, वो दो गांव है Mayobout 1 and Mayobout 2. 2 किलोमीटर के डिफरेंस पे वो गांव है. The villages are situated on the bank of Ivindo River. Just it is on the fringe of the Minkebi National Park. एक शाम को क्या डिसाइड किया बच्चों ने, पॉपुलेशन भी 150 के आसपास उस गांव का रहा होगा. कुछ बच्चों ने ये डिसाइड किया, दे डिसाइडेड टू गो फॉर, कि चलो आज शिकार करते हैं. उन्होंने एक डॉग लिया, हंटिंग डॉग, कुछ वेपन्स लिए और शिकार करने चला गए. और एक चिंपैंजी मारकर लाए. वो रात को उन्होंने चिंपैंजी को मारा, मारकर तो लाई थे, यहां पे काटा, बनाया और खाना खाया. और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जो 27 लोग गए थे, उस 27 लोगों में 18 लोगों की मौत दूसरे दिन सुबह हो गई. यहां से पुष्पिंदर जी इबोला वायरस, अगर आपने नाम सुना होगा इबोला वायरस का, तो यहां से इबोला की शुरुआत होती है. इसका मोर्टेलिटी स्ट्राइक रेट 86% है. उस खाने में प्रॉब्लम नहीं था, उस इकोसिस्टम को छेड़ने में प्रॉब्लम था. बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर इतने वायरसेस है, वायरस पे हम जानते भी नहीं, हम रिसर्च भी नहीं किया हमने कि वाइल्ड लाइफ पे कितना आपको वायरस मिलेगा. वो बहुत सारे ट्रांजिट स्टेज पे आते हैं. कभी वो ट्रांजिट मोड पे ह्यूमंस में आकर स्टोर हो जाते हैं, कभी कहीं दूसरे में मोड स्टोर हो जाते हैं, फिर वो ह्यूमन में इन्फेक्ट करते हैं. उनका मोड ऑफ जो ट्रांसमिशन है वो कुछ होता है. इस पर एक जोन्स ने रिसर्च की, जो कि लैंसेट में आया. उसने बहुत सिंपल बात की. उन्होंने कहा कि 1960 से 2004 के बीच में कितने नई बीमारियां आई. बड़ा सिंपल था, रिसर्च को उसने सिंपल कर लिया. हमारे यहाँ तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कि हम लोग रिसर्च में तो इन्वेस्ट करते नहीं है. हमारा कंट्री ऐसा है कि 0.65% टोटल जीडीपी का हमें रिसर्च पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. आप इजराइल को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, चीन को देख लीजिए, उनका 4.25, 3 इस तरह का परसेंटेज है टोटल जीडीपी का रिसर्च में. हमारे यहाँ तो 0.6% है. ये तो मैं सरकार की बात कर रहा हूँ. प्राइवेट सेक्टर में तो और भी वो लोग, अगर उनका कंपैरिजन करें तो उससे भी कम करते हैं. तो जोन्स ने देखा कि 2000
सॉरी 1960 से 2004 के बीच में करीब 335 ऐसे नए डिजीज आए जिसका की ओरिजिन जूनोटिक था और मोस्टली वाइल्ड लाइफ था। I was really worried about it. कि why are we not? Because having spent 35 years in our service, in my service, in forest, I haven't come across anything called research. We don't research. अब आप देखिए, जो हमारे कंट्री में अभी लॉकडाउन हुआ था, दैट वाज टर्म्ड एज द स्ट्रिक्टेस्ट, टफेस्ट इन द वर्ल्ड। तो पुष्पिंदर जी, मुझे लगा कि अगर इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है तो कुछ भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि सड़क पे निकलने पे गिरफ्तार कर रहे थे। उसी समय WWF का एक रिपोर्ट आता है, वर्ल्ड वाइड फंड। वो कहता है कि जो फॉरेस्ट में पोचिंग है, किलिंग है एनिमल्स का, फॉर दैट मैटर अंगुलेट्स, उसका किलिंग 22% से बढ़ के 44% हो गया। स्मॉल एनिमल्स का 4% से बढ़ के 22% हो गया। What does it mean that we are not silent even a time like COVID? And believe me, because we always hear that something has gone wrong with the Wuhan. Wuhan is a province in China. कि कोविड वहां से निकला होगा, क्या हुआ होगा, बिकॉज चाइना इज वन कंट्री विच डज नॉट लेट एनीबॉडी कम इन एंड रिसर्च ऑन इट और इन्वेस्टिगेट ऑन व्हाट हैपेंड। बट आई विल टेल यू वहां भी क्या होगा। एवरीथिंग मूव्स अराउंड फाइनेंस पुष्पिंदर जी, एवरीथिंग मूव्स अराउंड फाइनेंस। वाइल्ड लाइफ का जो मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट, वो 23 US बिलियन डॉलर का है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वेट मार्केट कितने जगह डेवलप्ड है। आप हमारे नॉर्थ ईस्ट में जाइए, उनके खाने का पैटर्न बहुत अलग है, जो हम सोच नहीं सकते वो खाना खाते हैं। और वुहान को जब मैं रिसर्च कर रहा था, मेरे दिमाग में एक बात आई कि व्हाई नॉट दिस जूनोटिक डिजीज, देयर इज नो डाउट इन इट कि जो कोविड वायरस है, सोर्स इसका जूनोटिक ही है। तो मैं देख रहा था कि 2013 से लेके और 2020 तक वुहान एक ह्यूबी सेंग प्रोविंस में एक जगह है जो यांगत्से रिवर के बगल में है। वहां पे 2013 से 20 के बीच में 70% ऑफ फॉरेस्ट कवर वाज गॉन, इट वाज कट, इट वाज फिल्ड। अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन डॉक्टर साहब, कि जो उसका वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ विल कम ओवर टू सिटी। अब उस वाइल्ड लाइफ को आप क्या करेंगे, बिकॉज इसका एक इंटरनेशनल मार्केट है, आप उस वाइल्ड लाइफ को फिर मारेंगे। मैं थोड़ा सा डाइवर्जन आपसे लूंगा और बताऊंगा कि मैं जब यहाँ पे कहीं एक जगह पे पोस्टेड था, तो एक बार मैं रात के गश्त, हम लोगों को पुलिस की तरह रात में गश्त भी करना पड़ता है, फोर्स रहती है, सब कुछ रहता है। तो मैं जब रात में गश्त कर रहा था तो देखा कि 2 ट्रक चला रहा है। उस 2 ट्रक पे हाथी को बांध रखा है ऊपर, और हाथी का जो हेड है वो पीछे की तरफ है, मतलब वो आप ट्रक के ड्राइवर की तरह नहीं है, पीछे, और उसके दोनों पुट्ठों में उसने 2 बड़े स्पीयर की तरह घुसा रखा है जिससे खून निकल रहा था। वो ये था कि हाथी हिले नहीं। मैंने जब पकड़ा, उसको अरेस्ट किया, तो बोला ये मंत्री जी के, मैं मंत्री जी का भाई हूं, एंड ही वाज अ ब्रदर ऑफ फॉरेस्ट मिनिस्टर इन यूपी।
तो बाकी तो बातें जो हुई वो अलग हुई, जो कार्रवाई मैंने की मैंने पूछा करोगे क्या इस हाथी का। उसने बताया कि मैं इस हाथी को राजस्थान ले जा रहा हूं, वहां इसको मारूंगा और मारने के बाद इसके बोन्स को बोन पाउडर के रूप में मैं इसे पाकिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान से होते हुए चाइना भेज दूंगा। क्योंकि चाइना में एक बिलीफ है कि वहां पे अगर आप इसको लेते हैं तो आप में जवानी बरकरार रहती है। ये होता है वाइल्ड लाइफ का मार्केट। और ये आज आप भी देखेंगे कि बहुत लोगों को शेर का नाखून चाहिए, टाइगर का नाखून चाहिए, बिल्ली का ये चाहिए, हिरन का ये चाहिए, तो ये होता है। इंडिया इज अ वेरी रिच कंट्री from a biodiversity point of view. India is very rich. We have 350 mammals, which is somewhere around 7.6% of the world total world share. 1,224 bird species, which is 2.6% of the world share. 197 amphibians, 408 reptiles, which constitute 6.2%. And 2,546 types of fishes, which is somewhere around 11.7% of the world share. But unfortunately, we have 4 hotspots. Hotspots भी हमको सोचना पड़ेगा। हिमालयस है, वेस्टर्न घाट है, इंडिया बर्मा रीजन है, एंड सुंदरलैंड। मैं सोचता हूं कि एक एक एग्जाम्पल आपको लेकर बता दूं, बाकी तो अपनी जगह है। अभी आपने बहुत एक जोशी मठ की बात सुनी होगी। जोशी मठ इज सिंकिंग, वहां घरों में दरार आ गया। बट नोबडी हैज एवर गॉन टू द डिटेल व्हाई दिस इज हैपनिंग, एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड. My dear friends, this is a beginning of the end. Joshi Math is not sinking, Joshi Math is sliding. क्या हुआ कि उत्तरांचल में एक बाढ़ आ गई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का, और the entire world is turning towards smaller micro dams, but we are the country, we are going in for bigger dams. For example, Uttarakhand में 17 mega dams are being built and 43 small dams are being built. जब मैं क्लाइमेट चेंज पे आपसे बात करूंगा, then I'll let you know what happened in Chorabari way back in 2013. The entire humanity was washed away. ऋषि गंगा में भी क्या हुआ था? तो इन लोगों ने क्या किया कि जो ऋषि गंगा में अभी यहां पे विष्णुगाड़ और तपोवन के बीच में ये टनल खोद रहे हैं ब्लास्टिंग से। हिमालय इज वेरी फ्रेजाइल, very fragile. The ecosystem is very fragile. और in the process of, उन्होंने क्या किया कि एक्वाफर को पंचर कर दिया। जो एक्वाफर को पंचर किया तो एक दिन में 7 से 8 बिलियन लीटर ऑफ वाटर इज गसिंग इन। ये 2009 से चल रहा है सर, which is more than enough for 3 to 4 million people जिसे पानी पी सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है, वहां के लोगों का है। ये हुआ कि वहां पे आज की तारीख पे जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में
जहां पे ये है वो पूरा का पूरा शहर स्विंग कर रहा है। In last 30 years, 50,000 of forest, 50,000 hectare of forest land has been given away for non-forestry activities. आप सोच लीजिए 50,000 पेड़ अगर वहां काट लिया जाए तो क्या होगा? टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तराखंड में, जिसमें से 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, नेमली बागेश्वर, देहरादून, गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल, टेहरी गढ़वाल एंड उत्तरकाशी। इन सभी जगहों पे फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन कर रहा है। इन सभी जगहों पे फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन कर रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बायनरी रिपोर्ट है वो कह रही है। और उसके बावजूद भी हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है दिबांग, जो 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 जिन लोगों ने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश में लवली। दिबांग डिस्ट्रिक्ट में करीब इन लोगों ने क्या किया कि एक हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने का निर्णय लिया। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें 3.9 बिलियन US डॉलर का खर्च आ रहा है। ये इस 2023 के फरवरी में इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया और इसमें 3097 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। अब मैं बताता हूं आपको कैसे ये प्रोजेक्ट फॉल्टी है। 2 रिवर है पुष्पिंदर जी वहां, एक ड्राई और टैंगोन। टैंगोन रिवर पे वो 80 मीटर का बांध बना रहे हैं और ड्राई रिवर पे 101 मीटर का बांध है उनका। वहां पे उस जगह पे वो प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं जहां पे कि जो एरिया सिस्मिकली बहुत ही सेंसिटिव है। 34 earthquakes have taken place in last 7 years. Why should I go in for this kind of thing? Why should I go in for this kind of thing? It's a virgin forest, 3-tier forest, ground, middle and top canopy. Virgin forest. टोटल पेड़ जो काटे जाएंगे उस पूरे प्रोजेक्ट में वो करीब 3 लाख पेड़ होंगे। 365 tribal villages are going to be shifted. लेकिन हम लोग we don't care about these things. एक कंट्री है नॉर्वे, which is 43 times bigger than this दिबांग, लेकिन उसमें सिर्फ, अगर आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ उसमें 283 टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं और दिबांग में अकेले 300 टाइप्स ऑफ बर्ड्स मिलेंगे। ये डाइवर्सिटी का लेवल है। दिबांग इज होम टू 75 different types of mammals, 6 different types of colored Asian cat, rufous necked hornbill, which is one of the rare species found in this forest. फॉरेस्ट क्या होता है कि फॉरेस्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं और कॉरिडोर के रूप में काम करते हैं। मतलब वहां का एनिमल आता है, क्योंकि दिबांग नेशनल पार्क भी है, और इस फॉरेस्ट से होता हुआ फिर वो नीचे चला जाता है। मेरे समझ में नहीं आता है कि आपको काटने की जरूरत क्या है, क्यों काट रहे हो आप इतने पेड़ों को?
जबकि अर्थक्वेक से सिस्मिक जोन पे है ये। 300 glaciers which are supporting this river, these two rivers. क्लाइमेट साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 2050 तक इनका ग्लेशियर जो है जिससे ये वाटर को फीड कर रहे हैं, 2050 तक 60 to 70% ड्राई अप हो जाएगा। आपके पास पानी है नहीं, आप सिस्मिक जोन पे बैठे हुए हो, फिर भी आप पेड़ काटने की सोच रहे हो, और वो भी पेड़ जो कि रिप्लेस आप नहीं कर सकते। मैं फेवर में नहीं रहता हूं कि आप एक दिन में 25 करोड़ पेड़ लगा दो, बिल्कुल बेकार वाली बात है। 25 करोड़ पेड़ आप लगा ही नहीं सकते एक, और लगाओगे भी तो फॉरेस्ट नहीं बन सकता। दिस कुड बी प्लांटेशन। आप रोड साइड प्लांटेशन कर लो, कैनाल साइड प्लांटेशन कर लो, रेलवे साइड प्लांटेशन कर लो, बट यू कांट क्रिएट अ फॉरेस्ट। मैंने इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ऑनरेबल पीएम को भी, मैंने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा। हमने कहा इसकी जरूरत नहीं है सर। अब वैसे भी जो पूरा का पूरा एनर्जी सेक्टर ही शिफ्ट कर रहा है हाइड्रोजन की तरफ। जब मैं क्लाइमेट चेंज पे आऊंगा तो बात करूंगा। अब इधर तो हाइड्रो पे बहुत कम काम हो रहा है, बड़े सारे कंट्रीज में तो हाइड्रो पे काम ही करना छोड़ दिया, अब हाइड्रोजन पे काम कर रहे हो। अब दूसरे एक और मैं बताता हूं, आसाम में एक देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क में वो एलिफेंट रिजर्व है। और छोड़ दीजिए बाकी, वहां पे तो जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसको हम लोगों ने करीब 98 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड ओपन कास्ट माइनिंग के लिए दे दिया कि आप कोयला निकालो उससे। फॉरेस्ट इज द फर्स्ट चार्ज ऑफ वाइल्ड लाइफ। पुष्पिंदर जी, जैसे हमारा घर, आपके घर में 4 कमरे होंगे, आप रह रही हैं, सोफा होगा, फ्रिज होगा, पंखा होगा, सब कुछ होगा। हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए तो वही फॉरेस्ट है, उनका घर है, और हम उसमें घुसे जा रहे हैं। हम घुस ही नहीं रहे हैं, हम उनको वहां से बाहर कर रहे हैं। जब इसकी गंभीरता, इस पे जब आवाज आई, लोगों ने इस पे विरोध किया, तो गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने एक रिटायर्ड जज से एक कमीशन बनवाया, एक रिटायर्ड जज की कमीशन से, जिसको कि 1 मैन कमीशन कहते हैं। और उन्होंने ये कहा कि आप देखकर बताइए कि कितना नुकसान हुआ। अरे भाई, सीधा पकड़ो और जेल भेजो उस आदमी को, जो उसका सीईओ जो 12-15 साल से वहां पे माइनिंग कर रहा है बिना परमिशन का। जज साहब ने एक रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट वॉज टेबल्ड इन द ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली, कुछ नहीं हुआ। फिर किसी ने पीआईएल किया, हाई कोर्ट ने फिर पूछा कि क्या आप, फिर उसने एक जज साहब को कमीशन दिया, कमीशन किया और बताया कि आप जाकर देख के बताओ कि अभी माइनिंग हो रही है क्या। लेकिन हम लोग फॉरेस्ट को, इसीलिए जब मैं बड़ी ओपनिंग इसमें मैं कह रहा था कि वी हैव टेकन द फॉरेस्ट हैज बीन रेलीगेटेड टू अ वेरी बैक सीट। वी डू नॉट नो हाउ मेनी COVID we are going to face in time to come, in years to come. We are sitting on a time bomb. अभी लखनऊ में एक ऐसा वायरस है, जस्ट इज फ्लोटिंग अराउंड। मैं जब डॉक्टर से बात कर रहा था तो बोला कि सर मैं इसमें कोई दवा नहीं दे सकता। हमने कहा क्यों नहीं दवा दे सकते आप? बोला पता ही नहीं है, ये वायरस 1 महीने तक आपको हाई टेम्परेचर में रखेगा। ये नया वायरस है, अब क्या है पता नहीं, क्योंकि हमारे पास रिसर्च नहीं है।
तो ये तो बड़े माइल्ड सिम्टम्स हैं। ऐसा भी सिम्टम्स आ सकता है कि 2-3 दिन के बाद आदमी चला जाए इस दुनिया से। एक आसाम में दूसरा नेशनल पार्क है, एक टेक्नोलॉजी कहते हैं एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग, ERD। ये डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। इसमें क्या किया गवर्नमेंट ऑफ आसाम, और गवर्नमेंट ऑफ आसाम क्या, वो हमारा ये जो गैस निकालती है वो ONGC, उन्होंने कहा कि देखिए हमें लैंड तो चाहिए नहीं, हम जमीन के अंदर ड्रिल करेंगे, हम बैठे होंगे चंडीगढ़ में और आसाम से हम ड्रिल करके और गैस निकाल लेंगे, जो नेचुरल गैस है। उसका इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट किए बिना उन लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी। और उसके बाद जब रिग पे आग लगा तो करीब 1.5 से 2 महीने तक आग बुझा नहीं पाए वो। और रिग के 3 किलोमीटर के आसपास पैडी और कुकुम्बर पैदा होना बंद हो गया। करीब 11,000 लोग माइग्रेट किए। इस नेशनल पार्क का जो वाटर बॉडी था, वो वाटर बॉडी में पोल्यूशन आया, ऑयल पोल्यूशन था। यही वाटर होल्स होते हैं जहां से वाइल्ड एनिमल्स पानी पीते हैं। वाइल्ड एनिमल्स मरने शुरू हुए, वाइल्ड लाइफ मरना शुरू हुआ। लेकिन हमारे यहाँ का जुडिशियरी सिस्टम पे इतना स्लो चलता है कि आप जल्दी कार्रवाई नहीं कर सकते। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है, दे वांटेड टू कनेक्ट रिवर्स विद ईच अदर, और उसमें क्या है कि 14 हिमालयन रिवर्स और 16 पेनिनसुलर रिवर्स को वो जोड़ना चाहते हैं। जोड़ेंगे कैसे? 3,000 रिजर्वायर बनाएंगे एंड रफली 30 कैनाल्स के माध्यम से वो जोड़ेंगे, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इकोलॉजी। अब केन बेतवा का एक एग्जांपल मैं बताता हूं। केन है मध्य प्रदेश में, बेतवा है उत्तर प्रदेश में। They wanted to connect two rivers called Ken and Betwa. The objective is to provide 6 lakhs hectare, which lies in Madhya Pradesh, to be irrigated by the connected rivers. Number 1. Number 2, यूपी में 2.5 लाख हेक्टेयर को ये इरिगेट करेंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव इनका है कि 41 लाख लोगों को पानी पिलाएंगे मध्य प्रदेश में, और 21 लाख लोगों को पानी पिलाएंगे ये यूपी में, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। और एक ऑब्जेक्टिव और है कि दे वुड लाइक टू जनरेट 103 मेगावाट ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी। इस पूरे प्रोसेस में, बिकॉज आई हैव वर्कड इन दिस एरिया, जो वल्चर्स हैं, दे हैव गॉट वंडरफुल ब्यूटीफुल नेस्ट इन केन। और यहां पे जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, उसमें रफली 7 से 7.5-8 लाख पेड़ काट दिए जाएंगे। When I had gone to Ken, because I was working in Betwa, यहाँ के तो रिवर के बारे में मुझे पता था। केन जब मैं वहां गया तो वहां पे समर में वाटर ट्रिकल्स डाउन इन द केन रिवर। आप कहीं पर भी आप किसी भी वेबसाइट पे देखिएगा कि आप देख लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा कि बेतवा में कितना पानी का लेवल रहता है लीन सीजन में, और कितना रहता है ड्यूरिंग रेनी सीजन। आपको नहीं मिलेगा। एंड अबव ऑल,
30% of this 103 megawatt of electricity would be utilized in lifting this water from Kane to Betwa. अब आप जो ये 7 लाख जो पेड़ काट रहे हो, इसका रिप्लेसमेंट कहां होगा? क्या इसका इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट हमने किया? क्या हमने देखा? इनफैक्ट when I was in government of India, मैं एक बार जब उस समय प्लानिंग कमीशन used to be strong and we had a meeting with BSI and ZSI. BSI के डायरेक्टर भी आए, ZSI के भी डायरेक्टर आए, और अभी भी मैं आपको कह रहा हूं कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले को अगर आप पूछ लीजिए कि क्या आपने सारे फ्लोरा फौना को एनलिस्ट कर लिया है इंडिया में, हमको यही नहीं पता कि वहां पे कौन सा फ्लोरा है, कौन सा फौना है अभी भी। ये जब स्थिति आएगी तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा कल को। और अब आप बताइए कि पूरा का पूरा इरिगेशन सिस्टम इज चेंज्ड वर्ल्ड वाइड। अब ड्रिप इरिगेशन की जरूरत हो रही है, कहां पे फ्लडिंग करके आप पानी दे रहे हो? अब तो ये हो रहा है कि क्रॉप पैटर्न को चेंज करना है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। राइस बहुत ज्यादा पानी चाहिए, 1 किलो में 3 से 4 हजार लीटर पानी चाहिए होता है। गन्ना है, गेहूं है, वाटर डिमांडिंग क्रॉप है। अब पानी की कमी वर्ल्ड वाइड हो रही है। इंडिया इज वन ऑफ द वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री, और वहां पे हम इरिगेट करेंगे पानी से? पानी है कहां पे? 4% ही तो फ्रेश वाटर आपके पास है, और 90% अब उस फ्रेश वाटर से इरिगेशन दे रहे हैं। वर्ल्ड का 4% फ्रेश वाटर आपके पास है बस। अब उसके बाद अगर हम गोवा में आते हैं, गोवा से सटा हुआ 2 स्टेट है, कर्नाटका और महाराष्ट्र। वहां पे एक नेशनल पार्क है, उसको कहते हैं भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एंड मॉलर नेशनल पार्क। पहले इसमें क्या क्या है वो देख ले सर। इसमें 721 प्लांट स्पीसीज है, 219 बटरफ्लाई स्पीसीज है, 43 टाइप्स ऑफ फंजाई है, 235 टाइप्स ऑफ बर्ड्स है, एंड 70 टाइप्स ऑफ मैमल्स है। ये रिकॉर्डेड है। वैसे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गलत से रिकॉर्ड करता है, क्योंकि हमारा जो रिकॉर्डिंग होता है वो वर्किंग प्लान सिस्टम है, और वर्किंग प्लान में वो कॉपी करते रहते हैं। जो कभी पुराने समय के जो फॉरेस्टर रहे होंगे उन्होंने जो लिख दिया वो लिख दिया, बाकी वो कॉपी होता रहता है। पर जो भी है, जिन्होंने भी काम किया होगा या काम किया होगा, अब उस भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में वो क्या कर रहे हैं कि 2 ट्रेन लाइन लगा रहे हैं। 2 ट्रेन लाइन को उस नेशनल पार्क के बीच से ले जा रहे हैं, और सड़क को भी ले जा रहे हैं। ये मालूम होना चाहिए कि वो पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है, वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट कर्नाटका को और महाराष्ट्र के बीच में कॉरिडोर के रूप में काम करता है। आप में से कोई भी जो सजग साइंटिस्ट रहे होंगे, सजग लोग रहे होंगे, लास्ट मार्च में जो टेम्परेचर गोवा का था, इट वाज 6 to 7 डिग्री सेल्सियस मोर देन नॉर्मल। इतना गर्म गोवा कभी नहीं था, और न रहा कभी इतना गोवा गर्म। ये स्थिति हो गई थी कि गर्मी की वजह से वहां के स्कूलों में छुट्टी दे दी गई, टूरिस्ट के इन्फोस कम हो गए, होटल्स वालों ने बहुत सारे होटल्स बंद कर दिए क्योंकि टूरिस्ट नहीं आ रहे थे। और उसका कारण था जो सी ब्रीज था, उस सी ब्रीज क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आता है मार्च में, वो आया नहीं। और उसके बाद ये कैटास्ट्रॉफी हम कर रहे हैं। 185 हेक्टेयर्स फॉरेस्ट लैंड इससे खत्म होगा, और करीब 50,000 पेड़ कटेंगे उसमें।
आप इससे अंदाजा लगाइए कि क्या हम करने जा रहे हैं. Rajaji National Park, I think many of you must have gone there. I don't know. There was a lovely place, picturesque place. One fine morning, the Chief Minister of Uttarakhand thought that we should expand our Joli Grant Airport. और उन्होंने जोली ग्रांट एयरपोर्ट को बढ़ाने का निर्णय ले लिया. Let us not have one airstrip. We'll like to have n number of airstrips. We'll like to have n number of facilities. We'll like to make Uttarakhand an international hub. A 243 hectare of forest land was proposed to be given away for the non-forestry activities. And the forest land which was supposedly given was coming from the Elephant Tiger Reserve. Again, the disruption of the ecosystem. Hello, sir. Yes, sir. Oh, I think Can you yes. please wind up in 2-3 Yes, minutes, if possible? I will wind up. I'm just doing. I'm sorry I couldn't look at the watch. No problem. It was such a wonderful talk. We enjoyed it. So we'll try to wind up in 2-3 minutes, if possible. Yes. I'm just going to wind up All right. because I'm not going to take much of time. I'm sorry, Dr. Saab, I couldn't look at the watch. It's all right. The watch is in front of me and I used to look. It's all right. So that ecosystem is disrupted. And that corridor is gone. Similarly, what happened to Jim Corbett? The government of Uttarakhand, the government of India decided to have one tiger safari within the national park, which is unheard of. So, in fact, I'm cutting half of my lecture short, and I'd like We'll to. have one more. We'll have one more lecture later on. Yes. I'm sorry, I could not. It's in fact, such it a was good my lecture. fault. It is such a good lecture. We'll arrange one more lecture. So now I would like to have your questions for another 5 minutes, then call it a day. Okay. I can see Ajay Srivastava ji. Yes, Ajay, yes. Ajay. Namaskar, Ajay ji. Dr. Ajay Srivastava. Anyone can ask. Anyway, he must have some problem in connecting. Okay, then Pushpinder, can you please ask some question to sir? Any question, anyone can put a question. Srivastava, Yeah. Sir, I want to ask जैसे आपने बताया कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि हम इतने सारे प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, है ना? और आपकी जैसे इंटेलेक्चुअल लोग गवर्नमेंट को एडवाइस देने के लिए भी बैठे हुए, एडवाइजरी कमेटी होती है उनके पास, तो फिर भी ऐसे डिसीजंस क्यों लिए जाते हैं? ऐसी क्या मजबूरी होती है सरकार की कि वो ऐसे डिसीजंस लेते हैं कि जिससे इतना नुकसान होता है हमारे एनवायरनमेंट को? पुष्पेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि ऐसा होता है कि गलती हमारी है. Most of the bureaucrats, because having put on a service 35 years behind me, most of us are having no backbone. I mean, we earlier in the Sardar Patel's time, we always used to call the still frame bureaucracy. So that isn't there, and we, in fact, we are giving in front of the political bosses, and that is how the things are happening. Advices are not heard, and those are taken into committees who are really not able to stand up and say that this is wrong, sir. Don't go in for this kind of thing, because we have come to a point of no return. Pushpinder, we have come to a point of no return. The total, I'd like to give you one statistics. The Forest Conservation Act was framed in 1980, and till 1980, from 1980 till today, I mean till 40 years after 1980, we had lost 3,50,000 hectares of forest land, and in last 10 years we have lost 1.25 lakhs hectare of forest land. So in 30 years,
we had gone up to the level of what? 3.5 thousand hectares. And in only 10 years, we have covered a distance of 1.21 hectares, lakhs hectares. So we are going at a very faster rate, and probably the way we are going will not be able to save our forest for the posterity, and our children are going to be without forest if the place is there like this only. Thank you. Dr. Srivastava from Ranchi. Dr. Srivastava from Ranchi, St. Xavier's. नमस्कार सर। नमस्कार। अजय जी नमस्कार, कैसे हैं आप? पहले ये बताइए, आपसे आपको देख के तो बिल्कुल ठीक है सर। आपकी ऊर्जा हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। वंडरफुल टू हैव यू विद अस सर, थैंक यू। आपके आशीर्वाद से बिल्कुल अच्छे हैं सर। रांची कैसा है सो बताइए। हाउ इज रांची? मौसम काफी ठंडा हो गया है। गुड, मौसम ठंडा हो गया है और यहाँ बैठने के लिए देखिए पंखे भी नहीं चलाने पड़े हैं। बधाई हो, हम लोग एसी में चल रहे हैं सर, 24/7 एसी चल रहा है। एसी भी चल रहा है, एसी 24/7 ठंडा हो गया है। 24/7 चादर भी हल्का ओढ़ना पड़ रहा है। मतलब ये टेम्पररी है, अभी कुछ दिन पहले शुरू हुआ और 4 दिन लगातार धूप हो जाएगी तो फिर वापस गर्म हो जाएगा। सर थैंक यू। श्रीवास्तव जी कुछ इनसे पूछिए आप। जंगल की स्थिति पर तो मतलब सर से तो मेरा विभेद रहता ही है। मतलब सर के सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और इसमें कोई शक ही नहीं है कि जंगल है तो हम हैं। लेकिन बात हमारी यही रहती है कि देश में 25% लोग हैं जिनको सुविधाएं मिली हुई हैं, 75% लोगों को सुविधाएं नहीं मिली हुई हैं। तो अब जिनको जो हैव्स हैं वो तो कंफर्ट के से आगे बढ़कर लग्जरीज की ओर जाना चाह रहे हैं और उनको कोई रोकने वाला है नहीं। लेकिन जो भी हम सड़कों पर या किसी भी परियोजना पर हम ब्रेक लगाते हैं तो उससे वो 25% आबादी जो है अफेक्टेड नहीं होने जा रही है। आबादी अफेक्टेड होगी वो जो 75% है जो हैव नॉट है उनको होगी। तो इस पर बहुत ठीक कर रहे हैं आप। मैं आपको बता दूं अभी फॉरेस्ट कंजर्वेशन डॉक्टर साहब, मैं आपको जस्ट आई वांट टू लेट यू नो वन मोर थिंग that Indian the Forest Conservation Act has been amended in 2023. Now what is happening that a bigger chunk of forest is going to go away. It's not going to stay with us. It's very bad. In the name of anything you call. And first of all, that 1 hectare, minimum of 1 hectare land, maximum has not been written in it. Minimum of 1 hectare land can be given away for anyone who wants to take it for the residential purpose. So look at the whole thing. Now the forest land, which was a sanctum sanctorum for others to come in, could be given away for those who wanted to make houses or residential complexes. My dear ladies and gentlemen, I tell you, now the builders, the real estate owners, they have a very strong nexus with the political bosses. And ultimately what will happen? Think of something imaginary. If the gentleman who is sitting in Ranchi and tomorrow fine morning you find that a bigger chunk of forest land is going to be given away to Adanis or Ambanis or Tatas for a residential complexes, what can happen? I agree. As far as the national security is concerned, forest land should be considered, but not for the residential complexes. Yes, it is very wrong. Very wrong. So this amendment is disastrous. I tell you, disastrous. With one stroke of pen, Doctor, when we got acquainted with one, probably some notings on some posting on the WhatsApp wall, you said that who are you, and then I told you about me and then all. Yes. The government of India has proposed a project in Andaman and Nicobar Island where they are going to find. As far as you going for the airstrip, good. You are going for the naval port, fine. We are afraid. We should tackle China. We should be prepared for this eventuality to come if that comes in. We should be ready for that. But not for the resort, not for the beauty parlor,
not for anything that comes in the name of luxury. Exactly, And- sir, exactly. And they are going to cut 10 lakhs of mangrove forest in the name of these colonies. That is very wrong, very wrong. Absolutely inappropriate. Absolutely inappropriate. Fully agree to this. So I think we can have one more session of Dr. Uma. Always, sir, I Very soon. love to talk about the forest because forest is very close to my heart. I have worked in this area, and it is not because I have worked, because I want to let others know about the forest, because forest is Sir, related to your life. it was a wonderful talk and we learned so many things from you. Thank you, sir. And very soon I'm going to request you for another talk. Thank you. Now I request Pushpinder Kaur to give the vote of thanks. Thank you, sir, for your talk. I would like to thank you, Dr. Uma Shankar, for his time for us and share his views on the status of forest in India. I was really intrigued in the talk that people like me generally don't read about forest, but now it is like an awareness program for me. Like I would like to read more about the forest and the status and the what are the problems that the deforestation is causing to the environment and to people. And I'm also thankful to Dr. Swaranjit Singh, who organizes such informative talks and call the eminent personalities from whose experiences we learn a lot and get the knowledge on the topics of concern. I'm also thankful to the audience for their for the participation in the today's event. Thank you. Thank you very much, Pushpinder, for the beautiful welcome. And now the vote of thanks. Thank you very much. Thank you, sir, Dr. Uma. Thank you so much, Dr. Srivastava, Dr. Sunil, Nikki, Dolly, everybody. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank Thank you, sir. everyone. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.